All right, excellent. Divya, it's getting recorded now, yeah? All right, I'll need a thumbs up once again as you see the presentation on your screen so that I know it's working fine, right? Guys, you can see? Wonderful. Someone just said that please also take the questions. I'm going to take the questions at the end ताकि सबके क्वेश्चन साथ में हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है वो शायद मेरी प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कवर्ड है. मैं ज्यादा टाइम नहीं बोलने वाला हूँ because one of the top tips of public speaking is always speak in the time limit that you've been given. All right, so I'm going to stay true to that and I'm going to have some time for the question answer as well. So मैं अगले 1 मिनट का टाइम स्पेंड करूंगा आप सबको बताने के लिए कि क्यों I think why it is important for all of you to kind of understand the purpose of public speaking, right? So on that note, let me just quickly move. I'm sorry, I just had to stop sharing the screen and it's going to be back here on your screens. So I'm not going to ask that basic question, who is this gentleman? Because I understand that all of you know who this gentleman is, right? So you all guys can identify him. All right, wonderful. Now I'm seeing some issue here on the presentation. Let me just reshare. I'm really sorry for this. There's something really going wrong. I'll just need a minute to fix it. All right, so this gentleman is Warren Buffett. लेकिन आप लोगों को मैं एक बहुत खूबसूरत सी चीज बताना चाहूंगा इन जनाब के बारे में. ये CNBC का एक आर्टिकल है. इन्होंने वॉरेन बफे ने एक कोर्स लिया था कॉलेज में जब MBA कर रहे थे तब की बात है. जय ने एक बात बताई कि बहुत सारे MBA जो होते हैं ना वो प्रेजेंटेशन में अच्छे होते हैं, लेकिन सच बताऊं वो लोग भी प्रेजेंटेशन में अच्छे नहीं होते हैं. इट इज जस्ट दैट देयर टीचर्स, बिकॉज आई टीच इन MBA एंड आई कैन टेल यू मेरे कोई बच्चे MBA के प्रेजेंटेशन देने में अच्छे नहीं होते, लेकिन by the time they get out of MBA they become excellent. The reason is we as teachers push them in MBA कि भाई तुम बोलोगे नहीं तुम्हारा placement नहीं होगा. Exactly. So Rahul says that this is Dale Carnegie course, that is what Warren Buffett did. Now this is what I wanted to also tell you. Now Warren Buffett ने एक बहुत खूबसूरत सी चीज वही आर्टिकल में कही थी कि इन ग्रेजुएट स्कूल, जबकि वो MBA का कॉलेज था, वो भी कोलंबिया का, which is one of the finest B schools in the world, in the pedigree of Harvard and Oxford. He says that in graduate school you learn all this complicated stuff, but what's really essential is being able to get others to follow your ideas. और ये मैं नहीं सीख पाया हूं. Now this is something even more important. नीचे inverted comma में उनका ही एक statement है. I don't have my diploma from the University of Nebraska. उन्होंने BSc किया था business management में. He says I don't hang University of Nebraska's degree on my office and I don't have my diploma from Columbia up there either. अगर मेरी ऑफिस में एकमात्र सर्टिफिकेट जो मैंने लटकाया हुआ है to show off or just to remind me of my achievement, it is the certificate from Dale Carnegie Institute of Public Speaking. Now this is Warren Buffett saying. उन्होंने कोलंबिया से MBA किया, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट किया, बट ही स्टिल सेज दैट ये सब डिग्रियों को मैंने साइड पे रखा है, लेकिन डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स जो मैंने $100 में किया था उस जमाने में, $100 is 7,000 rupees even today in India, right? उस जमाने में उन्होंने $100 का जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया था वो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है. Now all of you are chartered accountants. One thing that you will safe vouch with me today is अगर किसी बंदे को दुनिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलता है और वो भी वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलता है तो वो वॉरेन बफे है. Isn't it? So if he says this is the most important investment I've ever made in my life, then you should understand public speaking is indeed a very, very critical thing. Last में उन्होंने लिखा है,
That $100 course gave me the most important degree I have, and it is certainly the biggest impact in terms of my subsequent success. Now, this is what I wanted to understand. इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग को समझना, पब्लिक स्पीकिंग को जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. Now, having said that, I'm going to teach you something about the secret sauce of public speaking. Okay. Now, what is the secret of public speaking? There are some पॉइंट्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग जो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा अगले 15-20 मिनट में, और हो सकता है उससे आपका स्पीकिंग अच्छा हो जाए. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी जस्ट गो थ्रू देम वेरी वेरी क्विकली. The first thing that you need to understand about public speaking is something called as psychology. Psychology क्या है? दूसरों का या अपना खुद का अगर बिहेवियर हम क्यों ऐसा करते हैं उसको समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है. एंड one of the terms in psychology is something called as glossophobia. So anybody has an idea what is glossophobia? Anybody who can tell me what is glossophobia in the chat box quickly? Yeah, that's right. So Kritesh tells me it's the fear of public speaking. In fact, you are right. Now, glossophobia is nothing but the fear of public speaking. So imagine it is actually something which is diagnosed as फोबिया. अभी एक चीज हम सबको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है इज कि हम सबको ये लगता है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है ना, इसलिए मेरा पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं है. अभी एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक स्पीकिंग और लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग मीन्स बीइंग एबल टू स्पीक इन पब्लिक. लैंग्वेज मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, फ्रेंच है, रशियन है, मैंडरिन है, so many of them. So you will see that there are so many people who can speak in public very well even in Gujarati. अभी गुजराती तो तुम सबको आती है, हिंदी तुम सबको आती है, लेकिन फिर भी कोई लोग होंगे जो आपसे अच्छी हिंदी स्टेज पे जाके बोलते हैं, which is actually the skill of public speaking. Now, why I'm talking about languages, because a lot of people feel consistently कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग इसलिए खराब है क्योंकि मेरा अंग्रेजी अच्छा नहीं है, लेकिन ये सही बात नहीं है. वॉरेन बफे वाज एन अमेरिकन. He was born and brought up in an English speaking family, and he still did not know public speaking. Now, this is what you need to understand. I'm going to quickly tell you, or make you rather go through the next slide of public speaking, which is this. This is basically from Washington Post, which is one of the leading dailies. और उन्होंने कहा है कि परसेंटेज ऑफ अमेरिकन्स हु से देयर फियर, सबसे ज्यादा डर अमेरिका में लोगों को किस चीज का लगता है, तो वो है पब्लिक स्पीकिंग का. उसके बाद सबको हाइट का डर लगता है. 25वें माले पे, 50वें माले पे, 150वें माले की बिल्डिंग है तो उसके ऊपर रहने का डर बाद में लगता है. एंड देन ऑन नंबर 3 इज द फियर ऑफ स्नेक्स and bugs and animals, and on number 4 is the fear of water and drowning. तो आप समझ सकते हो, and in an English speaking country also the fear of public speaking exists. So सबसे पहली चीज मुझे आप लोगों को जो ये कहनी थी वो ये था पब्लिक स्पीकिंग की साइकोलॉजी के बारे में. In fact, here I want to bring Warren Buffett in the discussion once again. So he says, I went to Midtown, signed up and gave them a check. But after I left swiftly, stopped the payment, and I just could not do it. I was that terrified. तो वॉरेन बफे भी पहली दफा में पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखे. उन्होंने पेमेंट किया और बैंक में जाके चेक रुकवा दिया, स्टॉप पेमेंट करवा दिया कि भाई नहीं नहीं ये मैं कोर्स नहीं अटेंड करने वाला हूँ. उसके बाद ही सेज दैट आई न्यू that I had to be able to speak in front of people. So again, I saw the ad in the paper and went down to sign up. But this time I handed the instructor $100 in cash, and I knew if I give them cash, I would show up. इसलिए दूसरी बार वो स्टॉप पेमेंट नहीं करा सकते, इसलिए उन्होंने कैश ही दे दिया कि ये लो $100 पकड़ो. और अब वॉरेन बफे ने $100 दे दिए तो वो सीखने ही वाले थे. Now this is something that you had to understand, right? So what I'm going to now do is take you through what exactly public speaking means. I'm just going to stop my screen for a moment. There are some
direction pointers that are emerging, which is not intentional. So I'll just stop my screen for a second and come back with all of you. All right, so we begin with the preparation. All good till here? You guys are hearing me well? If you guys can just tell me in chat. You guys comfortable? All right, excellent. Sounds good. So you guys already feel that public speaking is important? Wonderful. So thank you so much, everyone. We'll quickly now move to what I'm going to call is preparation. Public speaking करे कैसे? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीजें हैं वो है tools. Now, what are the tools that you need for public speaking? The first thing that you need for public speaking is statistics. अब statistics की क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? Because it adds to the realism. Now, I'm going to give you 3 tools. To be very honest, there are about 25 tools of public speaking, but because I don't have much time, I'm going to give you 3 most powerful tools which are going to be able to add value to your speeches, all right? And I'm going to give you them with examples. ऐसा नहीं है मैं statistics use करना चाहिए ऐसा बोल के छोड़ दूंगा. I'm going to give you some real examples on how it can do things wonderful for you. So first thing is statistics. It adds realism. सच्चा लगता है. अगर मैंने बोला नहीं होता कि वॉरेन बफे ने $100 का इन्वेस्टमेंट वो भी आज से 50 साल पहले किया था पब्लिक स्पीकिंग में, तो अगर आप ये चीज नहीं मानते, आप बोलते कि सर तो बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि सर का धंधा होगा, क्योंकि सर को मजा आता होगा सिखाने में. The moment I say it's $100, it's a statistic, you kind of buy into that argument. So the first thing, it adds realism. The other thing it does is give you credibility कि अच्छा ये मेरे पास figures पड़े. The third thing it does is it makes your content more memorable. Now why it makes your content more memorable is लोगों को बहुत सारी चीजें आजकल के जमाने में information process करनी पड़ती है, but they are not able to because our minds are not trained to process so much information. And therefore if you can make your content memorable, chances are they're going to remember you and your speeches. And the only way to do that is add statistics which are powerful, which can be game changers. All right. The other thing it does is allows you to manipulate. I'm not going to teach you about manipulation, partly because it's not something which is very ethical, and at the same time, of course, it needs much longer duration of time. And I'm sure that you are in a profession where eventually you are going to understand the importance of these words and the need to stay away from what we call as manipulation. So I'm not going to talk much about manipulation, but one thing that it also does is it moves emotions. वो आप लोगों को हिला देते. Now here's something that I wanted to show you. For example, how many of you know that every single day in India 5,000 children die? अभी आजकल कोविड की वजह से हर रोज इंडिया में 200 लोग, 500 लोग, 700 लोग मर रहे, and suddenly we are calling it a pandemic. We feel it's an emergency. We cannot take it any leniently, which is true. We need to wear mask and we need to do so many things. But कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आज की तारीख में भी पूरे इंडिया में 5,000 लोग मरते हैं. और ये किसने कहा है? ये यूनिसेफ ने कहा है. It's a very credible agency. Now what could be the reasons? I don't know. Maybe lactating mothers की health अच्छी नहीं है because healthcare facilities है, so a lot of young babies end up dying because of malnutrition. They must be lying. But the fact is, every single day 5,000 children die in India. And this is something which is very powerful. अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो चिल्ड्रंस की हेल्थ केयर के बारे में, अगर आप स्पीच दे रहे हो मदर्स की हेल्थ केयर बारे में, वुमेन हेल्थ केयर के बारे में, this could be so powerful, isn't it? The other thing you need to know is, let's say for example water consumption. A lot of us know that the next world war, if it God forbid has to happen, it could be about water. बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश है जो पीने का पानी आज इंपोर्ट कर रहे हैं. उनके पास पीने का पानी नहीं है देश में, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश को बोल रहे हैं हमें पीने का पानी दो, just like we are getting fuel from Middle East and other countries. So in the same way, if you are ever talking or debating about matters of water, one of the things that you can tell is कि अगर हम सब collective movement जगाए तो हम पानी बहुत सारा बचा सकते हैं. And here is an example. अगर एक जीन्स साल में अगर हम कम खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम 10,000 लीटर पानी बचा सकते हैं. Now this is exactly what you can also do if someone
is a consuming non-vegetarian food, agar aapko lagta hai that you want to sort of tell him the importance of being vegetarian and so on and so forth, ho sakta hai wo shayad faith ke reason se na mane, because it's a part of his or her culture to eat non-vegetarian food, and it's not problematic for him. But in case, let's say, if you are a vegetarian or if you're a vegan evangelist और आपको बस किसी को कन्वर्ट ही करना है कि नहीं नहीं भाई तू आज से वेजिटेरियन खा, तो तुम कैसे कर सकते हो? नाउ हियर्स अनदर इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक. 1 kg बीफ खाना हो या 1 kg बीफ बनाना हो तो 15,415 लीटर पानी चाहिए. जस्ट इमेजिन 15,000 liters of water for just 1 kg of beef. But if you want the same person to consume 1 kg of rice, then all that will be consumed is 2,497 liters of water. 1 kilo चावल खाना है तो सिर्फ 2,497 लीटर पानी जाता है. 1 किलो अगर बीफ खाना है तो 15,400 लीटर पानी जाता है. Now what this means for you, what this does for a public speaker, if you are simply going to argue on the idea of faith, chances are कि कोई नहीं मानेगा. आप उनको बोलोगे भाई नॉनवेज खाने से पाप लगता है, वो बोलेंगे भाई मेरे पापा खाते, मेरे दादा खाते, किसी को पाप नहीं लगा है, मैं क्यों मानूं? बट हो सकता है कि वही बंदा शायद वाटर कंजर्वेशन में मानता हो, फेथ में नहीं मानता हो, भगवान में नहीं मानता हो. He could be an atheist, but could be an environmentalist. Or the fact is that in his faith it is perfectly fine to eat non-vegetarian food. But हो सकता है वो water consumption में मानता हो. So the point is, if you want someone to change his behavior, even then statistics are very important. Now look at this. When I was in Switzerland, I realized this कि जर्मनी में आज की तारीख में भी, as we talk today, 50% of the electricity of Germany is nothing but solar. अब आज हम हमारे देश में भी ये कर सकते हैं. So if you are ever talking about climate change and if you're talking about renewable sources of energy and non-renewable sources of energy and the importance and the will of the politics and the policy making and all the paralysis that goes into it, here's a beautiful case that you can talk about कि जर्मनी अगर 50% अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट सोलार से जनरेट कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? Isn't that a fascinating question? शायद हो सकता है इसके बाद वो कुछ बोले ही ना. Right. So this is another question that you can kind of ask and use statistics very, very powerfully. So this is one of the first tools out of the 3 that I'm going to teach today. So is this good for all of you? You guys are doing good? आप लोगों को मजा आ रहा है? और you think यार सर हमको ये सब पता ही था, हम statistics यार हम CA वाले हैं, हमको अब statistics समझा रहे हो. This is helpful to all of you? Should I go forward? All right. Great. Right, I get some disturbance here. In case if you are unmuted, I would request you to please mute yourself so that we do not disturb the listeners. All right, I'm perfectly fine. All right, so the next step that you got to add in your speeches is what I call is humor. Humor बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और humor क्यों ज़रूरी है उसका मैं आपको reason बताता हूँ. The first thing that humor does is if I can get you to laugh with me, you like me more, which makes you more open to my ideas. बहुत सीधी सी बात है, जिस बंदे या जिस बंदी की वजह से आप ज्यादा हंसते हो ना दिन में, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसके साथ डिसएग्री करना. Believe me, this is another principle of psychology. If you are laughing with a friend a lot, it's going to be highly probable that you are going to also accept their ideas and suggestions, because laughing lets you establish a connection with your friend in the same way it lets you establish a connection with your audience. अगर मैं आप लोगों को हंसा देता हूँ पहले 2-3 मिनट में, chances are you're going to stay with me and say बॉस ये बंदा एक्साइटमेंट है, मजा आएगा, एंटरटेनिंग है. Because please understand, आजकल के स्पीचेस सिर्फ ज्ञान देने से नहीं चलेंगे. Knowledge is not enough. What ऑडियंस वांट्स, अगर मैं देखूं कि आजकल के ये जो 15-20 पार्टिसिपेंट्स, कृतेश यहाँ पे बैठा है, राहुल यहाँ पे बैठा है, ओम यहाँ पे बैठा है, दिव्या यहाँ पे बैठी, आकाश यहाँ पे बैठा है, इन सबको क्या चाहिए मुझसे? They just don't want knowledge. They want entertainment, they want enlightenment, they want inspiration, and then they want what I call it as knowledge.
ये सब कुछ उनको चाहिए, उनको इंसाइट्स चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको एनलाइटनमेंट भी चाहिए. नाउ दिस इज वेयर ह्यूमर डज द जॉब फॉर यू. व्हेन वी लाफ, साइकोलॉजी एंड साइंस विल टेल यू, जब आप हंसते हो ना, आपका हार्ट रेट बढ़ता है. इसीलिए बहुत सारे गार्डन्स में आप लाफिंग क्लब्स देखते हो. आप परिमल गार्डन में चले जाइए, पोस्ट या प्री कोविड एरा में आप लॉ गार्डन में चले जाइए, सुबह सुबह वहां पे लाफिंग क्लब्स है. ऑल दैट दे डू इज एक छोटा सा जोक बोलते हैं और सब 15 मिनट उसके ऊपर हंसते हैं. क्यों? क्योंकि हंसने से आपका दिल, your heart rate increases and it keeps you stimulated and alert. So उससे ये ensure होता है कि speeches boring ना बने, audience आपको ज्यादा पसंद करेगी as a speaker, and that is why it's important that you add humor. If you remember the finest of your teachers, school के अच्छे teachers कौन से थे, अगर professors अच्छे कौन से थे, आपको सबसे ज्यादा ऐसे कौन से प्रोफेसर थे जिसने आपको इम्पैक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा था जो हमें हंसाता था क्लास में, और was very fun to be with, was very liberal, was the one that we love. The reason is we establish a certain connection with them. As a speaker, you want to establish your connection with them. So this is one thing. And last is, laughter has been shown to improve memory and cognitive function. It helps the audience once again remember your ideas. Or lastly, I want to tell you, ऐसा कहा जाता है that I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. तो आज के सेशन में मैं कुछ कहूंगा, हो सकता है कि 3, 4, 5, 7, 10 साल बाद आप लोग भूल जाए मैंने क्या कहा था, हो सकता है आप ये भी भूल जाए मैं कौन हूं. लेकिन अगर मैंने आप लोगों को अच्छा सिखाया है, आप लोगों को एंटरटेन किया है, आप लोगों को एनलाइटन किया है, आप लोगों को इंस्पायर किया है, आप लोगों को इनसाइट्स दिए हैं, चांसेस आर यू गोना रिमेंबर मी एंड से बॉस ही वाज अ गुड मैन. उसकी वजह से मैंने आईपीएल मिस किया, उसकी वजह से मैंने तारक मेहता उल्टा चश्मा मिस किया, बट आई लव्ड व्हाट ही डिड. That is why you allow yourself to stay in minds of your audience for a longer duration. So humor is very important. बहुत लोगों को पता नहीं है, गांधी जी was a person who had a phenomenal ability to share jokes. उनकी humor के ऊपर बहुत सारे articles हैं that how humorous a person he was. So the thing is that you need to find yourself a way to be humorous in your public speaking, and this is something that I love talking about. लेकिन 2 मिनट में मेरी share screen इधर share नहीं करूंगा, and I just wanted to come back to the chat box and quickly ask all of you that what is alliteration? What is alliteration? Any one of you can just tell me what is the meaning of alliteration quickly? आप लोग मुझे बता सकते हैं alliteration क्या है? Improvement? No. Yeah. So Divya is there. I have got my answer. I'm going to quickly now take you through. John, it's not a grammar word. It's rather a figure of speech. But fine. I'm just going to take you through. Yes, Ankita, you are right, right? So I'm just going to explain you how alliteration can do wonders. This is one secret जो मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन जिसने किया होता है, एमबीए इन मार्केटिंग, उसको भी नहीं सिखाया जाता एमबीए के सेशंस में. एंड आई टेल यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट sources of good public speeches, and I'm going to give you some powerful examples. Stay with me, and here's something that I wanted to talk you all about, right? So what is alliteration? A term given to the repetition of the same sound or letter at the beginning of words in a phrase. Now, इसका मतलब क्या है? So Peter picked a peck of pickled peppers. This is a typical example of alliteration. अभी आप मुझे बोलोगे सर ऐसी public speech कौन देता है? किसी को समझ नहीं आता है. Peter picked a peck of pickled peppers, right? I mean, it literally sounds like a tongue twister, which anyways it is, that Betty bought butter, but butter was bitter, so Betty bought better butter to make the bitter butter better. अब ये किसको समझ आता है? आपको भी समझ नहीं आया what I said, right? It is only when Hrithik Roshan says चंदू के चांदनी चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, that you understand because it is Hindi. But otherwise you don't understand alliteration, but alliteration can be very powerful. Believe me, how brands use alliteration. Remember the big brands, Coca-Cola, it is alliteration. PayPal, it is alliteration. Dunkin' Donuts, it is alliteration. Dangy Doms, alliteration. Range Rover, Rolls-Royce, Cookie Cream, Minute Maid, Big Bazaar, Cafe Coffee Day, TED Talks. These are all alliterations. इसके अलावा दुनिया के जो भी अच्छे कार्टून है, आप उसका नाम देख लीजिए. डोनाल्ड डक, चाचा चौधरी, so many of them, Mickey Mouse.
ये सारे alliteration है. I mean, there's a reason why we call Chacha Chaudhary. There's a reason why we call Donald Duck. There's a reason why we call Peppa Pig. There's a reason why we called Mickey Mouse. Because this is all nothing but alliteration. Now, how do we use alliteration? हमारे इंडियनिज्म का स्लोगन क्या है? Incredible India. Now you see in and in doing the job here. जो नई अभी गाड़ी आई है मॉरज गैराजेस की एमजी, उसका स्लोगन क्या है? इंटरनेट इनसाइड. अब वो तो कह सकते थे ना द 21st सेंचुरी कार या जो भी उनको बोलना था, लेकिन नो दे आर नॉट सेइंग द 21st सेंचुरी कार और द टॉकिंग कार और द कार दैट यू कैन टॉक टू, राइट? बट दे आर सेइंग इंटरनेट इनसाइड. जैगवार का टैगलाइन क्या है? डोंट ड्रीम इट, ड्राइव इट. लैंड रोवर का टैगलाइन क्या है? द बेस्ट 4x4 बाय फार. फिला का टैगलाइन क्या है? फंक्शनल, फैशनेबल एंड फॉर्मिडेबल, राइट? So the thing is, this is the power of alliteration. Now I'm going to tell you a lot of songs. हमारे बहुत सारे ऐसे songs है. If you are a Gujarati, one of the songs that you would have listened is what? That song is पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी. Remember that song? Now what is that? Nothing but alliteration. उससे भी बड़ी चीज बताता हूँ. एक अद्भुत गीत है, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा. You guys remember this beautiful song which goes something like this. नदी किनारे नारियेरी. Right? How many of you remember Nadi Kinare or Nariyeli? Let me just stop here for a moment, my screen, and I just want to get back to chatting with all of you. How many of you remember this song, Nadi Kinare Nariyeli? All right, Kritish, you don't know Nadi Kinare Nariyeri? All right, Conan Bolwala says that he remembers this song, Nadi Kinare Nariyeri. Bharti says that she remembers. Who else? Who else? All right, Bharti as well. So all of you are saying Nadi Kinare Nariyeri is a very famous song. हम सबको पता है. But here's the magic. What is Nariyeri? What is Nariyeri? If someone can just write in a chat box very quickly, Nariyeri का मतलब क्या होता है? I'm just going to wait for a couple of seconds. We don't have time. We're really running out of it. What is Nariyeri? Oh, brilliant. Kritish says coconut tree. Yes, Shushri, it's not just a tree. It's a coconut tree. Now, please remember, I mean, I'm really sorry for using this term, but haram जाने दुनियाમાં क्या है? નદીના કિનારે નાળિયેરી ઉગતી હોય તો નાળિયેરી હંમેશા દરિયા કિનારે ઉગે, isn't it? But the reason there is nadi in the song, you want to say nadi kinare nariyeri. Otherwise, technically speaking, on nadi, what you get is tarbuchdi. तरबूज उगते हैं ना नदी पे, नारियल थोड़ी उगते हैं. But we are saying nadi kinare nariyeri. Now, why we are doing this is because of alliteration. Alliteration is a phenomenal tool in public speaking. One of the most famous person who loves to use alliteration is someone called as Narendra Modi. I'm just going to come back to my screen and just going to tell you how Mr. Narendra Modi uses alliteration in all the speeches that he makes and everything. But before I go back to my screen, I just want to ask you all, you guys follow Narendra Modi ji ke speech? Kabhi unke speeches sunte ho? Yes or no? Quickly. Yes, no? Jai, Shrushti. All right, so Kritish, Trushank, all of you are saying that you guys heard of Narendra Modi's speech. Can you recollect something? Narendra Modi ji ne alliteration use kab kiya tha? Quickly. Modi ji ka example, koi alliteration use kiya? Sabka saath, sabka US. Wonderful. Garvi Gujarat. What else? Now here's something. All right, so I think some of you guys are just stuck here, not being able to recollect how Modi ji really used alliteration. Now Modi ji ने एक चीज करी थी. You guys remember Vikram lander? जो लैंड होने वाला था मून के सरफेस के ऊपर, लेकिन लैंड नहीं हुआ था. बेटा अब की बार मोदी सरकार इज अ राइम, इट्स नॉट एन एलिट्रेशन. वी आर गोइंग टू कम बैक ऑन राइम्स एज वेल, मे बी एट सम लेटर डेट. बट विक्रम लैंडर फेल्ड. अब विक्रम लैंडर जब फेल हुआ तो उन्होंने क्या संदेशा सब देश को दिया था? संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं टूटा है. Yes, that is what he said. संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं. Now that is an example of alliteration. Yes, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is another alliteration. There is another alliteration that he used. हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड से. अब उन्होंने हार्वर्ड क्यों यूज किया था? उनकी कोई दुश्मनी नहीं है हार्वर्ड से. वो कह सकते थे ना हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सफोर्ड से, बट ही सेड हार्वर्ड. The reason is he wanted to use alliteration. There's so much alliteration that he uses that if you notice his speeches, you will realize कि ये तो बहुत ज़्यादा use कर रहा है, because that is a very powerful overtone in political discourse. If you remember Congress,
पार्टी ऑन द अदर हैंड, उन्होंने भी एक बार एलिट्रेशन यूज किया था बहुत पावरफुली, वो मंत्र भी बहुत चला था. ऑफ कोर्स इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही चीज नहीं है, बट इवेंचुअली कांग्रेस आल्सो यूज्ड powerful alliteration. Yes, Rahul, thank you so much. But what is one thing that Congress used? कांग्रेस ने क्या किया था? चौकीदार चोर है. Wonderful, Shubham got there. Right, so now this is another alliteration. इसके अलावा कांग्रेस ने कभी alliteration यूज नहीं किया, इसीलिए वो कभी ऑडियंस के साथ उनके कैंपेन, उनके स्लोगन उतना कनेक्ट ही नहीं कर पाए. But Modi ji has been able to do it. The reason is he's been able to use alliteration very powerfully in political discourse, and that is something we can learn from him. Alliteration is extremely, extremely important, right? So I'm going to quickly go back to my screen once again and go ahead with the presentation. All right. Now the most important thing that you guys got to do is voice modulation. Now right now you see मैं कुछ ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ, कम जोर से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ. वो मैं क्यों कर रहा हूँ? Because there's something called as voice modulation. मैं कुछ भी बोलूँ, अगर एक ही स्पीड से बोलूंगा आप लोगों को मजा नहीं आएगा. The reason is our mind is trained to think multiple things. जब तक मैं आप सबको फोकस नहीं करवा सकता तब तक आप नहीं सुनेंगे, और आपका फोकस तब तक नहीं रहेगा जब तक मेरे वॉइस में वेरिएशन हो, मॉड्यूलेशन हो. इसलिए एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट कोई नहीं सुनता, ट्रेन के अनाउंसमेंट कोई नहीं सुनता, रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि एक ही टोन में बोला जा रहा है. एयरपोर्ट पे एक ही टोन में बोला जा रहा है. Nobody is caring for that. But voice modulation does a beautiful thing. Take the statement, 5 words, I was born in Australia. पहले वर्ड को मैं जब बाहर देता हूँ, I was born in Australia. इसका मतलब क्या है? दिव्या ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुई थी. So if I and Om or if I and Divya are having an argument, and if I tell her I was born in Australia, I'm trying to emphasize that I was born in Australia, not you. So this is when you emphasize on I. Now when I say I was born in Australia, I'm going to tell a native of an Australian कि भाई मैं भी ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं इधर घूमने नहीं आया हूँ, मैं भी इधर पैदाइशी ऑस्ट्रेलियन हूँ. I am someone who is a localite. I am a native. I'm not a newcomer. I'm not an immigrant. I'm not a refugee. But I am someone who has taken birth in Australia. That is another important voice modulation. And when I just say I was born in Australia, तो जब मुझे कोई कहता है जैनिल जी तुम कहाँ पैदा हुए थे, तुम तो न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे, then I suddenly get offended. नहीं नहीं, मैं न्यूजीलैंड में पैदा नहीं हुआ था, I was born in Australia. So this, you see, 5 words, one statement, emphasizing on 3 different letters suddenly changes the meaning. Now this is what you got to understand. आप जब भी बोल रहे हो, जो भी कुछ बोल रहे हो, आप जिस चीज पे भार दोगे उस चीज को लोग ज्यादा सुनेंगे. And voice modulation does not necessarily mean shouting. It means being able to vary your voice. There's a whole module, there are a number of hours that we can go on and on about it, but this is something, if you can pick from this right now, it's going to be important. I'm going to be here on my last slide very quickly, and we're going to take questions if you want, and that is, so what should I do? All right, so आप सबका मंत्र होगा कि सर अभी आपने इतना सब बोल दिया, अब हम करें कि तो करें क्या? So this is what my answer to you is. Remember, सबसे पहली चीज पर्पस. I mean, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, पर्पस यूजुअली ऐसा कहते हैं कि भाई पैसे कमाना ठीक है, तुम्हारे लाइफ में पर्पस क्या है? बट लेट मी टेल यू, इन पब्लिक स्पीकिंग द पर्पस ऑल्सो पेज. जनरली पर्पस की जब हम बात करते हैं तो पैसे की बात नहीं करते, बिकॉज पर्पस इज अ हायर ऑर्डर थिंग. इट इज अबव बीइंग मटेरियलिस्टिक इन लाइफ. बट in terms of public speaking, being able to understand the purpose of public speaking means that you are understanding it will pay. ज़्यादा पैसा मिलेगा. In fact, I'm going to tell you one quick story about Warren Buffett before I leave. The other thing you need to understand is psychology. मैंने आप लोगों को कहा कि दुनिया में सबकी ना लिटरली सबकी फटती है पब्लिक स्पीकिंग से. आपको लगता है सर कितना कॉन्फिडेंटली फटाफट बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो तो पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर है. बिलीव मी, वो दिखावा है. There's a saying, 99% of the people in the world fear public speaking and 1% people lie. All right. The third thing you need to understand is preparation. Preparation के लिए मैंने आपको 3 tools, 4 tools आज दिए हैं. ऐसे बहुत सारे tools हैं. You can use them and become a better speaker. The fourth thing you need to remember is being persistent. You have to do it again and again. जब भी मौका मिले कर लो. पब्लिक स्पीकिंग का जब भी मौका मिले, प्लीज रजिस्टर एंड डू इट विदाउट फियर. जो भी होगा देखा जाएगा. एंड लास्ट थिंग इज यू हैव टू कीप परफेक्टिंग. प्लीज रिमेंबर, दुनिया में 3 ही टाइप के स्पीचेस होते हैं. द फर्स्ट इज you think you want to speak.
दैट इज द फर्स्ट स्पीच. आपको लगता है मैं ये बोलूंगा. दूसरा, जो आप सच में बोल के आते हो वो, योर परफॉर्मेंस. और तीसरा स्पीच, यू विश you had spoken. All right, so the third part is about perfecting it. Every time you do a speech, please record it, understand क्या गलतियां हो रही है. जो अच्छा बोल रहे हैं आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स, आपके स्पीकर्स कॉन्फ्रेंसेस में, उन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या सही कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं. आई एम श्योर यू कैन लर्न so much from that. And I just promised the last story from Warren Buffett. He had gone to Columbia Business School, जहां पे वो पढ़ते थे, और उन्होंने एक इंटरैक्शन किया था बच्चों के साथ, और उनको पूछा था कि अगर आप लोग को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो प्लीज कर दीजिए. द रीजन इज, इफ यू लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, यू विल इंक्रीज योर नेटवर्थ by 50%. अगर जिंदगी भर में आप मान लो 1 करोड़ रुपए कमाने वाले हो, तो just by being a good public speaker, instead of earning 1 crore, you will now earn 1 crore and 50 lakh rupees. This is what Warren Buffett says. If you want this article, you can tell Divya, she will send you that article. I'm going to text it to her, right? So this is the importance and the purpose of public speaking. Thank you so much. It has been a pleasure to talk with all of you. If you have some time and if you have some questions, I'll be happy to stay back for a minute and take some questions from all of you. Yeah, Divya, the floor is yours. Yes, thank you so much, sir. If anyone having any query, they can unmute themselves. Sir, Jay this side. Can I ask a question? Go ahead, Jay. So sometimes what happens, like we do have intentions and emotion to speak, right? But we don't get that perfect words or typical to form a sentence, or like we don't know how to convey our emotions, right? So what's the perfect measure to overcome that? Jay, you mean to say that you're not able to exactly express the way you should or you want to? Exactly, and sometimes what happens, like as being vice chairman in Vikas, I need to speak like recurringly, right? So what happens? I repeat those things. I'm sharing this my personal things with you and all of these participants. So what happens? I repeat some things, right? I need to speak in every program. So how can I overcome it? How come I come with, like, how can I come with new things, and what should I do? Should I observe more, or should I read more, or what should I do? Fine. See, one thing you have to understand is that everybody is a bad speaker. दुनिया में कोई अच्छा speaker होता ही नहीं है. The aim that we should have is that we should be less of a terrible speaker. मतलब हम कम बुरा स्पीकर बने, वो हमारा गोल होना चाहिए सबसे पहला. So now all of you might be for a moment saying कि ये सर कितना खूबसूरत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, stuff like that, right? I'm seeing so many compliments coming to me in my private window. But the reason I'm speaking slightly better than all of you guys can is just because मैंने 350 मैचेस में कमेंट्री की है, क्रिकेट मैचेस में. Now, one thing you have to understand, Jay, is that if you want to get better, the only way is that you have to keep doing it. And more important, you'll have to keep perfecting it. मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा आज एक वेबिनार था, तुमने बोल दिया, कल दूसरे वेबिनार में बोल दिया, तीसरे वेबिनार में बोल दिया. बोलने से कुछ नहीं होता है. It is important that after you have completed, you listen to your speech and ask yourself कि इसकी जगह मैं कैसे बोल सकता है. आज मैंने जैनिल सर को ऐसे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे और अच्छा मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं, इससे और अच्छा इंट्रोड्यूस कैसे करूं, इससे अच्छा इंट्रोड्यूस कैसे करूं. एंड दैट इज हाउ यू इंप्रूव. सो योर गोल शुड बी कि आज एक नई चीज करूं, आज की स्पीच में मैं एलिट्रेशन यूज करूं, आज की स्पीच में मैं स्टैटिस्टिक यूज करूं, आज की स्पीच में ह्यूमर यूज करूं, आज की स्पीच में वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करूं. एंड वंस यू स्टार्ट इन द हैबिट ऑफ डूइंग स्मॉल 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 थिंग्स, one fine day you will see that your entire presentation is coming along as if you are a master speaker. All right, so this is how it has to be. Yes. Thank you, sir. Thank you for guidance. Great. Sir, there's one question from Rahul Sharma. Right, so thank you so much. I think Rahul has a question. I'm going to just read that out. Yes, sir. All right, so some of you guys have questions about how to improve English. Now, please understand, एक English का भी ना psychology है.
हम सबको बहुत ज्यादा डर लगता है अंग्रेजी से, एज इफ इट इज सम एलियन लैंग्वेज दैट we kind of cannot perfect. But let me tell you, that is not true. I mean, आप लोगों ने, I mean, are you guys still with me? Especially the ones who have asked me question. Can you tell me कि आपके घर में कोई बच्चा है, वो गुजराती या हिंदी कितनी उम्र में बोलना सीखता है फ्लुएंटली? મમ્મી મારે ખાવું છે, મને ભૂખ લાગી છે, મારે રમવા જવું છે, મારે બાથરૂમ જવું છે, આ બધું કેટલી ઉંમરે બોલતો થાય? What do you think? At what age does he start speaking his mother tongue fluently? At what age? 3 to 4, Bharti? All right. 2.5 is what Trushank says. ठीक है, 3 साल. So basically मुझे 3 या 4 जवाब मिले, तीनों का एवरेज 3 साल है. मैं 2 साल आपको बोनस देता हूँ, 5 साल. So 5 years is when all of you are very sure कि कोई भी बच्चा अच्छे से बोलना शुरू कर देता है, right? Now that practically means is that to learn any language, not just Gujarati and Hindi, to learn any damn language, you need 5 years. That's it, simple. वो 5 साल में भी पहले 2 साल तो दिमाग ही नहीं होता है बच्चे का. He's still not sort of literally is not been able to develop his brain, isn't it? So essentially all you need is 1.5 years. अगर 1 साल अच्छे से मेहनत करते हो अंग्रेजी सुधारने में, अब वो कैसे सुधारे? You have to read and you have to understand what you are doing. क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो? जैसे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैंने बोला, you have to analyze where you're going right, where you're going wrong. In the same way, this is all that you have to do in terms of English also. कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ग्रामर मेरा सही है, गलत है, and all of it. And the more you analyze yourself, देखो प्लीज हमेशा याद रखना, ज्यादा पेपर लिखने से, ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा स्पीचेस देने से, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने से अंग्रेजी किसी को नहीं आने वाली. What you have to do is you have to analyze. मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैंने क्या बुरा किया, क्या सही किया, क्या बुरा किया, क्या सही किया. Only when you can get into this process on your own of analyzing your mistakes, only then you will be a better speaker in English, in Gujarati, in Hindi, whatever it is. All right. So I think that is about language. Do we have any other questions? To all those who are saying that they like my session, I'm happy. Thank you so much. And I kind of cannot really express how happy I am also. There's another question, sir, confidence kaise बढ़ा hai? Now this is a beautiful question. Any of you know who is Suresh Dalal, or I mean Suresh Dalal का नाम सुना है? कौन है वो? Especially those in Gujarat. All right, Srushti, I am taking your question as well. But before that, who is Suresh Dalal? Ah, wonderful. Ankit has got it. He's a poet, right? So Suresh Dalal को ना किसी ने एक बार आके पूछा, उनका एक प्रोग्राम था, वो पोएट्री रिसाइट कर रहे थे और उनकी पोएट्री रेसिटेशन खत्म हुआ. उसके बाद ना एक लेडी ने उनको जाके बोला कि सर मुझे पोएम लिखना सिखा दो. अब सुरेश दलाल इतने बड़े पोएट, वो चौंक गए कि भाई पोएम लिखना किसी को कैसे सिखा सकते हैं. सो ही हैड अ वेरी ह्यूमरस रिप्लाई टू दैट लेडी. ही सेज, बेन मारू नाम सुरेश दलाल છે, तरला दलाल नहीं. So there is no particular recipe of being able to write poems. In the same way, you also have to understand that अगर आपको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है ना, तो कॉन्फिडेंस की कोई दवाई नहीं है दुनिया में, वो खुद से डेवलप करना पड़ता है. क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेज पे जाके नहीं बोल पाए तो क्या होगा? बेइज्जती होगी. कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी. आई कैन सेंड यू 2 स्पीचेस ऑफ नोबल लॉरिएट्स, नोबेल प्राइज मिला है उनको, और वो नहीं बोल पा रहे स्टेज पे. दे आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट वर्ड्स, दे आर नॉट एबल टू फ्रेम देयर सेंटेंसेस. कुछ नहीं होता है. ये सब ना आपके दिमाग में आपने बिठा के रखा है कि मैं स्पीच देने जाऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस कम है तो मैं कैसे बोलूंगी. ठीक है, किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है? बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे प्रोफेसर है, बहुत सारे एमबीए जिसका अच्छा नहीं है, एंड दे आर डूइंग फाइन. The point is, confidence only comes as you go on the stage. It's a vicious cycle. अगर आप गरीब हो तो आप पढ़ नहीं पाते, अगर आप पढ़े नहीं हो तो आप गरीब रहोगे. In the same way, you have to break the cycle. कहीं ना कहीं आपको डेट लेना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, and then you become rich. In the same way, the same process of confidence. अगर आपको confidence acquire करना है in let's say public speaking, you'll have to do it. There's no other way. कोई दवाई नहीं है. The best medicine, the best, I mean, do you guys really want to know the secret of public speaking confidence? अगर आपको लगता है कि मेरा confidence बहुत खराब है, do you want to know a quick secret? If you write yes, I am going to share, otherwise that's fine, we can let that go. अगर आपको कोई सीक्रेट जानना है कृतेश, अच्छा ठीक है चलो,
Ankita, you also want to know the secret of public speaking? Believe me, this is the secret. All those who know me well, उनको पता है मैंने मेरी लाइफ में काफी टाइम शशि थरूर जी के साथ स्पेंड किया है, प्रणब मुखर्जी के साथ स्पेंड किया है, मैंने संजीव सान्याल सर के साथ स्पेंड किया है. दे आर फिनोमिनल ओरेटर्स, बहुत खूबसूरत स्पीकर्स है. लेकिन ये सबके साथ ना मैंने टाइम स्पेंड करने के बाद एक ही चीज समझी है, दैट अ गुड पब्लिक स्पीकर इज समवन who considers his audience as donkeys. अपने audience को गधा मान के चलते हैं. Now, what it does is, I'm not saying you be arrogant. I'm saying is basically कोई भी public speaker होता है उसका confidence कम ही होता है, क्योंकि 100 लोग बैठे हैं सामने, तुम अकेले बैठे हो. How is this a fair stage? It is not, because you are one, there are 1,000 people standing in front of you. You are never going to be confident in life. The only way you can be confident is that you have to think, मैं श्री कृष्णा हूँ, सामने वाले सब गधे बैठे मेरे सामने. And suddenly your mind is like, now I'm feeling good because सब गधे ही है. And then it's a mental trick. It's something, most of the public speaking books, if you read, they'll tell you this quick secret, that think everybody sitting in the audience is a donkey, and then you'll be a very confident speaker. So this is the secret of confidence, to be very honest. I think Srushti had one question. How to start a speech. Now that's, I mean, there's a whole science behind starting speeches, but usually there are 3 quick formats about starting a speech. The first thing, you can always start your speech is with a question, which is what we call as a rhetoric. A powerful question पूछो कि can India become a superpower? Then start your speech. Can you become a good public speaker? And then start a speech. Ask a good question. Or the second good way to start a speech is humor. कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग ह्यूमर, जहाँ पे ऑडियंस हंस पाए. पहली, मेरा ये मंत्रा रहा है, पहली 2 मिनट में अगर ऑडियंस को आपने हंसा दिया ना, तो लिटरली आपको कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, बिकॉज ऑडियंस विल स्टे विथ यू. दैट इज अनदर वे टू ओपन अ स्पीच. द थर्ड वे इज यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, कोटेशंस एंड all the research that you've been able to pull off, and something which is astonishing. देखिए, एक हमेशा चीज होती है ना कि अब दिव्या ने बहुत बोला, जय ने भी बहुत बोला, जयनील सर अच्छे है, जयनील सर फलाना है, जयनील सर ठिकाना है, सब कुछ बोला ना आपके, लेकिन ऑल ऑफ यू वर स्केप्टिकल. ये क्या पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे हमको यार, इतना उम्र हो गई, इतने टीचर इंग्लिश के हमको आ गए, गुजराती के आ गए, हिंदी को आ गए, किसी ने हमको ज्यादा नहीं सिखाया. अब ये अपनी ऑफिस में बैठे बैठे हमें पब्लिक स्पीकिंग सिखाया. आप सबको ये होता होगा, राइट? आई मीन, इफ आई वाज इन योर प्लेस, आई वुड आल्सो थिंक द सेम फॉर मी. But what happens is, first 3 minutes, first 2 minutes, how I interact with you is exactly what establishes the connection. पहले 2 मिनट में आप सबने जज कर दिया, मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. पहली 3 मिनट में मैं बोला ना, उसमें 1 या 2 बंदे ने ये वेबिनार में क्विट किया था. There were 18 or 19 participants. तब से लेके अभी तक 17 है. Which means in first 2-3 minutes I lost one candidate, but तब से लेके अभी तक किसी ने ये वेबिनार छोड़ा नहीं है. अब वो क्यों नहीं छोड़ा है? Because पहली 2-3 मिनट में I was establishing that connection, और I was able to do it, which meant कि अच्छा, आप लोगों को लगता है हाँ यार, ये मुझे कुछ सिखा के जाएगा, right? And that could begin with honesty. So मेरा way of starting this webinar was honesty. I told you कि masterclass सब टाइटल बनाने के लिए होता है, कुछ मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन I might be able to give something with you which you will feel thankful about, right? This was my promise. You can start with the promise as well. So, Srushti, that's one answer for you. What else you want to know? I think, are we all done with the questions, or you have any more questions? Sir, I have few questions. Someone has asked about interview, but I'm going to talk about interview slightly later. In fact, to be very honest, it's not a part of the purview. Public speaking is not interview. But yes, who, Divya, you had a question? Yes, sir. Yeah, go ahead. Who had a question? Yes, sir. I have few questions for you that I'm sure that everyone would like to know answers of those questions. Okay. Like in public speaking, what is more important, like content or delivery? Sorry, what is more important? Content or delivery? So let me ask you a question. You understand strategy and you understand execution? Divya? Yes, sir. So, if you were a CEO, tell me, would you love to wonderfully execute a bad strategy or poorly execute a great strategy?
What will you do? You can't do, right? एक बुरी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर Yes. सकते और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को बुरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. इन द सेम वे अ गुड कंटेंट पुअरली डिलीवर्ड or a poor content wonderfully delivered doesn't help. It is equally important. Okay. And so, like, how someone can address a hostile group? Hostel. Yes, sir. यार ये ना आजकल की नई बीमारी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई मीन पोस्ट आई मीन the advent of internet and the lack of discipline which we are seeing in my and your generation, hostility from audience has become a new challenge for public speakers, as if there was less challenges. But the a very important or a nice way to tackle them is using humor. If you have attended any stand up comics ना, मतलब बहुत सारे stand up comic के shows होते हैं, तो उसमें you will see that there are a lot of trolls or there is a lot of heckling or there is a lot of hostile behavior from the audience. But if you can use humor to silence them, to shut them, it can be very powerful. The other way to do it is if you're in a professional forum, you kind of sort of tell them, and that is where one very important thing I taught voice modulation, but something I have not talked about is tone. Now, tone is something your choice of words. तुम क्या बोलते हो, कौन से words use करते हो? Are you using a language which is very powerful, or are you being very ठीक है वाला? Now, when you're using a very powerful language, if you're using a positive body language, if you're using a heavy tone, suddenly audience को भी वो energy pass on हो चलती है कि बॉस ये नहीं चलाएगी hostile behavior. I have to be disciplined in a way. So your tone, in terms of your body language, in terms of choice of your words, in terms of reminding them about the professional conducts and ethics, all of that is very important. You can use humor, and there are a lot of other tools as well. I think you have a good question, and that is some of the ways in which you can handle hostile behaviors. Okay. And so, one last question. How one can overcome the tendency to say like in speeches? uh, well, to be honest, there's no particular um, uh, method of doing it, but one of the things that you can do is you can practice small activities. So when you are having your club meetings, or where you can have you could play games where anybody who does not use such disturbing words like and stuff like that gets a small gift, a chocolate or something like that. Now, if you practice to speak for 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds fluently without saying E, I, O, U. In that way, suddenly you will be realizing that you are training your mind to ensure that it speaks as it thinks. Usually this happens when we are not conversant in the language that we are speaking. तो अंग्रेजी में हम जब गुजराती होते हैं, हम हिंदी भाषी होते हैं, और जब हमें अंग्रेजी में स्पीच देनी है तभी ये ई आई ओ यू शुरू होता है, अयो शुरू होता है. अदरवाइज व्हेन यू आर टॉकिंग इन गुजराती, घर पे आई अयो यू शुरू नहीं होता unless you have forgotten something, right? तो ये दूसरी language, so it's in a lot of ways this is also lack of command on the language, which you can eventually sort of develop by being able to be fluent for 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, and so on and so forth. And if you practice that, chances that you're going to be able to speak more fluently. Okay, practice is must. Oh, absolutely. Yeah. Thank you so much, sir. All right, so there was one question on interview. Beta, interview Yes, is a very different topic, to be honest. There's nothing I've told about interview in this session, but there are a lot of things. I mean, I don't know what are your challenges on interview. If you can just send me here maybe your exact challenge in interview क्या है, सोचना है, आंसर देना है, कपड़े के बारे में पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, I don't know. But once you tell me your exact challenge, I'll be able to sort of
get back. The other question was, how did I start improving my public speeches? किसी ने मुझे ये पूछा, is it? How did you start improving your speaking? So I mean, how do you improve is as simple as that. You listen. आज मेरा session record हो रहा है. What I'm going to do is, मुझे जब भी अब time मिलेगा, कल परसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद, I'm going to look into it and I'm going to see what mistakes. Believe me, आज का session आप लोगों को अच्छा लगा, but I know I made 45 mistakes at least, if not more, because I believe 45 minutes का session था. हर एक minute पे मैंने एक mistake किया है आज. So I'm going to find out all those 45, 50, 100 mistakes, and then hopefully I'm going to find out what are the ways I could have handled them, and ensure that is the only way you can correct. So the only way you can improve is look at your content again and again and see if you could have done anything better than that, and be aware of the same next time as you speak. There's no real other way to do it. The other person was asking me how to give answers and how to speak in interviews. Well, you have to be very respectful, to be honest. You cannot be very authoritative. You have to be humble. You have to come across as someone who is a teamsman, and इंटरव्यूअर्स को हमेशा एक चीज जो अच्छी लगती है वो है ऑनेस्टी. आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत आसान होता है सबके लिए झूठ बोलना, ऐसे ही इम्प्रेस कर देना, बट इंटरव्यूअर्स आज के जमाने में जो अप्रिशिएट करते हैं वो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. बिकॉज एवरीबडी नोज दैट अगर आप 4 साल 5 साल मेहनत करके दुनिया का एक मुश्किल एग्जाम पास कर सकते हो, तो 40 साल या 30 साल वो कंपनी में रह के कुछ भी सीख सकते हो. दे आर नॉट रियली लुकिंग एट योर स्किल्स कि भाई तुम्हें कितना जीएसटी आता है, कितना टैक्सेशन आता है. वो सब जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट, बट बियॉन्ड द पॉइंट दे आर लुकिंग एट द कैरेक्टर ऑफ यू एज अ पर्सन, कि तुम इंटीग्रिटी है, तुम्हारे में ऑनेस्टी है. आर यू समवन हु इज सेल्फ लर्नर? आर यू समवन हु इज ऑनेस्ट? आर यू समवन हु इज अ टीम्समैन? आप टीम्स के साथ काम कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ इट. सो आई थिंक योर आंसर शुड बी एबल टू ब्रिंग योर कैरेक्टर आउट rather than just blindly giving your knowledge. So I think this is an important interview tip that I can kind of leave you all with. Yeah. What else? Anything else? Raj, you are good. I think no questions. All right, wonderful. So, Divya, I think we can end the session here. If So anybody wants to get before in ending touch. the session, I would like to invite Brett Choksi, our managing committee member of Ahmedabad branch of Vikasa, for vote of thanks. Sure. Very good evening to all of you. First of all, thanks to sir for a wonderful session to improve our public speaking, and all participate. Thanks. And I also thank to Jainil Shah sir, of chairman of WRC, vice chairman of WRC Harish Dariwal sir, and chairperson of Vikasa Anli Choksi ma'am. I thank to all of participants, and also sir, once again I thank you to give a wonderful session. Thank you so much, Raj, for that warm word of thanks. My heartfelt thanks to all of you. It's a very hardworking community. Being a chartered accountant is not easy. Keep working hard and make your nation proud. Thank you so much, all of you. Yeah. All right. So a lot of compliments flowing. Thank you so much, everyone. Ankita, Shrishti, Kanan, all of you. Thank you so much. Manika as well, Forum. All of you have expressed your heartfelt thanks. Feels good to hear. Thank you so much. All right, Divya. See you. Bye-bye. Thank you so much, sir. Bye-bye.